Assalamualaikum. First, I complete which I was discussing about Richard III. Then I come to your questions. That's the concluding part of Richard III. That the night before the final battle that will decide everything, Richard has a terrible dream in which the ghost of the murdered people appear, and these ghosts curse him. These ghosts anticipate that he will die the next day, and in the battle, Richard is killed. Richard's death in reality is very controversial. Whether he was killed in the battlefield or not, and uh, how was he killed? Whether he was on the back of his horse or you can say the actual position, and there was no, you can say, grave in the past that could identify that could be identified as the grave of Richard III. Not in the play, but in recent history, a few years back, Richard III's grave was discovered. I will discuss that point later. Uh, but anyhow, Richard is defeated and Richmond is victorious. Richmond is crowned as King Henry VII. Henry VII promises a new era of peace for England. The new king is betrothed to young Princess Elizabeth, the daughter of King Edward IV, in order to unite the warring houses of House of Lancaster and House of York. So that's the, you can say, story outline of this play, where significant things are murders employed by Richard III to come into power, and his hypocrisy and duplicity and deception through which he betrays every relation, wife, beloved, brother, mother, and nephews, nieces. Shakespeare's Richard III is the creation of powerful political as well as dramatic imagination. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिचर्ड थर्ड जो शेक्सपियर ने अपने ड्रामे में पोर्ट्रे किया, और रिचर्ड थर्ड एज द रूलर ऑफ इंग्लैंड, एज द किंग ऑफ इंग्लैंड, हाउ मच दे रिजेंबल एंड हाउ मच दे डिफर. Definitely, the major incident discussed in the play, they happened in the past, but the dramatist makes the persona of Richard III as evil, and for that purpose he has added certain things which were absent in the historical Richard of Gloucester. Historical Richard of Gloucester was not a hunchback, but Shakespeare preferred it to attach any physical deformity to that antagonist character. हम भी देखते हैं कि इंसानों की विशफुल थिंकिंग इसको कहा जा सकता है कि इंसान जो चाहते हैं कि जो अच्छा आदमी हो वो ज़ाहरी तौर पर भी परफेक्ट हो, शक्ल सूरत के एतबार से, कद काट के एतबार से, रंग के एतबार से. इसके मुकाबले में जो विलन है उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मिटी दिखाई जाती है,
हमारी फिल्मों में, पाकिस्तानी फिल्मों में खास तौर पर अगर आप पुरानी फिल्में देखें तो अक्सर जो विलन होते थे वो, उनको बैसाखियों वाले जो है वो विलन दिखाया जाता था, और फिर कोई टांगों से मजबूर है, या कोई काना है, या कोई और उसके अंदर जो है वो ऐब जो है वो दिखाया जाता। तो ये भी उसी तरह की एक ट्रेडिशन थी दैट इज मच criticized, much questioned in 20th and 21st century, that moral deformity is not an indicator of moral corruption at heart. Richard of Gloucester didn't have a withered arm. Richard of Gloucester wasn't born with full set of teeth. He wasn't carried in mother's womb for 2 years. But Shakespeare presented the character in that way, and it is thought that it was the impact of Tudor political culture. You can say sources which Shakespeare read: Henry VII's history, Henry VIII's histories, and then Henry VIII's daughter, Queen Elizabeth. She was queen in the time when he wrote that play. It is thought that sources of Shakespeare for making that drama and making the character of Richard III is the raw material that is found in the works like Polydore Virgil's Angelica Historia. Angelica Historia, that's the documents of history that was thought at that time official history of England. यानी ये सरकारी तारीख थी, और सरकारी तारीख ज़ाहिर क्या थी कि हेनरी सेवन ने खुद डिक्टेट कराई, commissioned by Henry VII and published in 1555. एक सोर्स ये है एंग्लिका हिस्टोरिया रिटन बाय पोलिडोर वर्जल। सेकंड सोर्स जो है वो टॉमस मोर का है। टॉमस मोर को आप जानते हैं, अक्सर जब आप डिस्कस करते हैं यूटोपिया को, या फिर जो मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन को आप डिस्कस करते हैं, तो ही बात सर टॉमस मोर वाज अंकल ऑफ हिज वाइफ एंड डन। He, that family was Catholic. Later on, they were penalized, and Thomas More was beheaded. And his work that was published after his 8 years after his death, that is called History of Richard III. तो टॉमस मोर की एक किताब थी हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड, उसके अलावा पोलिडोर वर्जल का एंग्लिका हिस्टोरिया था। इन दोनों सोर्सेज से शेक्सपियर ने ये पूरी स्टोरी जो है वो ड्राइव की, और उसको एक अपने मॉरल विजन, ड्रामेटिक विजन के साथ जो है वो प्रेजेंट। उस वक्त की ऑडियंस ने तो इसको डाइजेस्ट किया और इसको अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा हुआ, रिचर्ड थर्ड एक विलन कैरेक्टर है, मस्ट बी डिफीटेड, ही मस्ट बी इन दिस वे। दैट वाज नॉट मच क्वेश्चन द डिफरेंसेस बिटवीन रियल किंग Richard III and Shakespearean Richard III. But in 20th century, there was much debate. In England, a society of historians was made. That society is called Richard III Society. यानी जब हिस्ट्री को मॉडर्न तरीकों से पढ़ा गया तो उन्हें पता चला कि ये तो शेक्सपियर ने एक हिस्टोरिक कैरेक्टर को मलाइन कर दिया है, उसको मिस रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हिस्टोरियन ने काफी इसके खिलाफ बात की, काफी आवाज उठाई। ऐसा आपको पता है कि हिस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है कि जो हिस्टोरिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको खास जमाने में बदनाम कर दिया जाता है और उनको जो है वो ट्रेटर वगैरह बना दिया जाता है, और बात होती दफा होता है कि जमाने बदलते हैं और वही कैरेक्टर जो है वो हीरो बनता है। In England, there is the Society of Richard III Society, and in America, there is a society that is called Friends of Richard III. ये दोनों सोसाइटीज जो है वो हिस्टोरियंस की हैं, बट वेरी यू कैन से celebrities or you can say public figures are members of these society. For example, Society Friends of Richard III in USA, greatest painter
Salvador Dali, who is a great surrealist painter in the world. पूरी शेड पेंटिंग की हिस्ट्री में इतना बड़ा पेंटर जो अब इंसानों ने नहीं देखा, Dali Jitna. He was also you can say supporter of that movement, and he was member of that society. Richard III. There were different notable actresses of Hollywood. They joined that movement, and there is a novelist, Josephine Tay. She wrote a detective novel based on that. You can say difference between historical Shakespeare and real Shakespeare. Title of her novel is The Daughter of Time. We shouldn't forget the idiom. There is a maxim or idiom. Uh, Truth is the daughter of time. तो दूसरे लफ्जों में the daughter of time का अगर आप equivalent ढूंढे तो that will be truth. And truth जो जोसेफिन डे के माइंड में जो ट्रूथ है वो ये है कि शेक्सपियर ने रिचर्ड थर्ड को मिस represent किया and his portrait should be seen in modern researches. और यही वो रिसर्चेस थी जिनकी वजह से रिचर्ड थर्ड को म्यूजियम में, बुक्स में, आर्काइव्स में उसके जितने भी ट्रेसेस थे वो ढूंढने की कोशिश की. And quite recently, I think that was in 2014 when Richard III's remnants were actually discovered. Archaeologists were in search of Richard III's remnants और उसको जो है वो दोबारा से इकट्ठा किया गया and he was buried in 2014, यानी कि आज से कुछ ही साल पहले रिचर्ड थर्ड का बैरियल हुआ है और उसको जो है वो एक नोबल मैन के तौर पर जो है वो लाइक अदर यू कैन से किंग नॉट extremely hated king, he has been presented in new light and he has been buried with some hope and honor. और आप इसकी बाकी डिटेल नेट से भी देख सकते हैं अगर आप इसको इंटरेस्ट रखते हो. These are the themes of this play. First theme is conflict of good and evil and alluring power of evil. How evil allures a human being, how evil you can say attracts a man towards it, and what type of actions and initiatives a person takes when he is allured to an evil. There is also the concept relationship between state and the righteous king. When a king is righteous, the state flourishes, and when there is an evil king, the state declines. You can say that Henry VII and Henry VI, comparatively, they were the rulers in their times. The state of England flourished, and in the time of Richard III, it caused decline. But we are talking about only with the lens of Shakespeare. Otherwise, I have just mentioned there are debates about that era. Malevolence and its psychological aspects. Malevolence has been found out in the character of Richard as and the motives of this evil and malevolent behaviors have been discussed. Much quoted is Sigmund Freud, a great psychologist, a psychoanalyst of 20th century. When he reads the character of Shakespearean Richard III, Freud believes that Richard III is an exception. And he thinks that that exception is because of, you can say, an inherent attraction towards evil. Whether motive exists, motive like motive of, you can say, revenge or motive of jealousy, according to Freud, they are absent in his character. Duplicity of mirror. मिरर के बारे में एक बात याद रखें कि मिरर रेनेसांस एज में it was thought an emblem of instruction in order, and mirror was contrasted with shed. So mirror, you can say, in a way implies goodness, and shadow implies, you can say,
darkness and evil. But that mirror and shadow, and if their duplicity is seen in the character of Richard III. Richard III throughout the drama appears as a double mouth character, a character with double voice of voice of evil, voice of devil, voice of Machiavelli, and that voice is seen in his mostly soliloquies. When he is alone and he shares his plans, he shares his intrinsic intentions with audience, and that is compared when he is in the public and he speaks like a childlike innocence with the voice of virtue, with the voice of Christianity. So you can say he is thought an antichrist in the disguise of lamb or innocent child. ऊपर से वो ऐसा बन जाता है लॉर्ड हेस्टिंग बाद में ड्रामे में जब वो उसको when he becomes a dissenter he takes notice of mastery of pinning and pretending by Richard III, and he thinks that is such evil at heart and how he speaks, you can say, on the surface. That's the point, you can say, doubleness of his character or power of deception and pretending his, you can say, goodness while he is corrupt at heart, murderer, killer, incestuous. That type of man, when he is contrasted with Macbeth, you can see that Macbeth is devoid of all these things. Macbeth is not incestuous. Macbeth has no lust for sexual pleasure. He is true to one wife, Lady Macbeth, throughout the play. He has, you can say, he has not committed, you can say, parricide or fratricide. He has not committed murder of his own nephews. So, crimes which Richard III commits, they are more heinous in nature. And in Lady Macbeth's speeches, as we see that Macbeth is not a person who can feign goodness. He is, you can say, straightforward like heart on the sleeve, but for the sake of murder, for the sake of ambition, he has to do what actually is against his nature. He perturbs a lot, he faces much difficulty, but when he consults the witch's second time, he gets somehow a satisfaction, and then because his, you can say, goodness is much wasted when he meets witch's second time and gets his advice and later on follows that advice. But when Richard III and Macbeth are considered, there is one common point, both of them are striving for throne or kingship. But crimes which are committed by Richard III, they are more heinous than Macbeth's crime. Second, Macbeth somehow is man of conscience, but Richard III is not at all. He deceives his relations as well. Richard III is also taken as an actor because he acts, you can say, goodness to deceive others. First target was Lady Anne, second target was King Edward, then Queen Elizabeth, then Duchess of York, and even uh, he tries to deceive, you can say, his own followers, Lord Buckingham, Lord Hastings, and others. So, language, that play is much appreciated for its metaphorical theme, which is depicted through the language of play and playing.
या language of drama and acting, and that is at multiple levels. Even he shares that he is doing this. The way he woos and proposes Lady Anne, and he, you can say, exposes his breast and uh, shares the secret that he loves her at heart and he has committed the murder of her husband just to have access to her. At that point, you can say his very act is very like of an actor. तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं। डिस्कस तो इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपने, क्योंकि इस प्ले को मैंने मिड टर्म के लिए उस तरह सिलेबस का पार्ट नहीं बनाया जिस तरह बाकी 4 प्लेस थे, मैकबथ के साथ जस्ट कंपैरिजन के लिए इसकी जरूरत थी, तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे शेयर कर दिया है कि स्टोरी क्या है और दोनों का डिफरेंस क्या है। जब आप डिफरेंस की बात करते हैं तो फिर आप दो क्रिटिक को भी रेफर करते हैं। फर्स्ट वन इज विलियम हैजलिट एंड सेकंड इज पीसी ब्रैडले। William Hazlitt is the first critic who defends, you can say, Macbeth as a tragic hero on by comparing Macbeth with Richard III, and he thinks that Richard III has no conscience at all, which Macbeth has. That argument is further, you can say, elaborated and manipulated by A.C. Bradley, though Bradley does not declare Macbeth a tragic hero on the basis of just comparison of two personalities, Richard III and Macbeth of Scotland. His focus is on the imagery of Macbeth here, and he actually traces the comparison of two forces which are implicitly evoked in the play Macbeth. These are conflicting forces are of darkness and light, good and evil. You can say noble king and evil king, etc. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। उसके बाद अब दोबारा उसी पॉइंट पर हम वापस आ रहे हैं जो इस सेशन के शुरू में भी था कि आपके जो सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, उनको मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन मुझसे रिचर्ड III और मैकबेथ के हवाले से पूछा गया था, अगर उसका सेटिस्फाइंग आंसर हो गया तो ठीक है, अगर पूछना चाहते हैं तो मैं मजीद इस पर भी बात करूँ। जी फर्स्ट ये शाजिया, यू हैव रेज्ड योर हैंड, प्लीज स्पीक। शाजिया, she raised her hand. Is she here? I think she is not speaking. She is not here. Mahmood Hassan, yes, please. अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मैकबेथ के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि मैकबेथ और रिचर्ड जो है, रिचर्ड III जो है, इनमें ट्रेजिक हीरो के हवाले से मैकबेथ के अंदर वो ट्रेड्स पाए जाते हैं जो उसको एज अ ट्रेजिक हीरो जो है करार देते हैं। जैसा कि लिखते हैं क्रिटिक, मैकबेथ's कैरेक्टर इज नोबल, ही इज अ ग्रेट वॉरियर, but his tragic flaw is that of vaulting ambition, which drives from him to murder. Although Macbeth learns that he has violated his noble nature, he refuses to follow Lady Macbeth into madness and suicide, instead dying in the battle. तो सर रिचर्ड III जो है उसके अंदर भी अगर देखें तो कुछ क्वालिटीज वो आती हैं, लेकिन इसमें मेन डिफरेंस क्या आएगा, मतलब क्या लाइन ऑफ डिमार्केशन है जिसको हम ड्रॉ करें कि ये बेसिक रीजन है जिसकी बिना पर रिचर्ड III जो है वो एज अ ट्रेजिक हीरो नहीं है, मैकबेथ है। देखिए दोनों में एक चीज कॉमन,
वो है प्लैंड मर्डर। ठीक है, जो प्लैंड मर्डर है दैट इज नॉट अ ह्यूमन एरर or error of judgment or something like that. It is moral escapade, and that's the thing because of which Aristotelian standard does not own Macbeth a tragedy. But we have, you can say, a whole personality of Macbeth. If we just subtract one, you can say, element in Macbeth's life, that's his ambition to be king. Otherwise, he is a noble fellow, as you have said. So he has that advantage or that superiority to Richard III. In Richard III case, even we subtract that what we say vaulting ambition to throne, even then he seems, you can say, a mean character for his, you can say, interest in sex and what we say incest. That is Yes. in drama actually that is linked with his sense of inferiority complex, and it is thought because he has a physical deformity like hunchback, he thinks that no woman can love him, but he will get that fair creature, and for that purpose you can say he attains first Lady Anne, and Yes. later on he tries to marry Princess Elizabeth, though he fails it. He also Yes. Yes. tries to seduce Clarence's daughter. Clarence's daughter was also his niece. And there is a Yes. Lady Jane Shore. She is an absent figure in the drama, but I think that is a concocted story of Richard III that he has actually spread about King Edward IV. That King Edward IV has a beloved, a mistress. Whether Yes. Yes. it's true or not, it's not clear in the play, but he is the person who actually plays with his near and dear ones, their characters, their feelings, their lives, their property, and their title. And he is so, you can say, ruthless that he is not sparing the minor children who were actually uh, first abducted and put in Tower of London Yes. and later on Tower of Definitely. London. They were burned. So that type of cruelty is missing in the character of, Macbeth. Macbeth. Right, sir. Thank you, sir. जी फायजा आपने you raise your hand. अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। जी बोलिए, शाजिया बात कर रही हैं? जी 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 सर। सर मैं इसी क्वेश्चन के हवाले से बात करना चाह रही थी सर। ये है हमारा कैरेक्टर कि मैकबथ जो है वो ट्रेजिक हीरो है, लेकिन रिचर्ड थर्ड नहीं है ट्रेजिक हीरो। लेकिन सर अरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रही थी कि उसका जो है ना कंडीशंस वो है कि जो होता है ट्रेजिक हीरो, एक तो उसका जो रॉयल स्टेटस होना चाहिए, दूसरा उसका उन्होंने डेथ का है, एंड पे उसकी डेथ होती है। तो सर ये चीज़ें तो उसमें भी आ रही है ना, तो वो ये भी था कि अरिस्टोटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिचर्ड थर्ड को भी ट्रेजिक हीरो कहेंगे। है अरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिचर्ड थर्ड को ट्रेजिक हीरो कहेंगे, ये कैसे हो सकता है? सर उसकी ये सर उसकी ये कंडीशंस आ रही थी ना, उन्होंने दी हुई थी इसमें रॉयल स्टेटस भी उसका था, उसकी एंड पे उसकी डेथ भी होती थी, सिर्फ उसका जो प्लान मर्डर एक थी वो नहीं चीज़। नहीं, अब देखें, लेकिन उन्होंने मैं बताता हूँ,
most important thing of tragic hero is tragic hero must arouse the emotions of pity and fear. क्लियर? इसके ऊपर सारी कहानी जो है वो बेस्ड है. इन रिचर्ड थर्ड केस नो emotions of pity and fear are generated in the audience in this play. Yes, definitely. In Macbeth's case, emotions are produced. Emotions of pity and fear are produced. Though classical critics like Samuel Johnson disagree that emotions have been adequately produced. ये उनका एक नुक्ता नजर था, पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैकबथ में जेन्युइनली वो इमोशंस प्रोड्यूस नहीं हो सकते. अगर तो वो इमोशन प्रोड्यूस हुए तो फिर बहस अभी आगे बढ़ेगी. अगर इमोशंस ही प्रोड्यूस नहीं हुए तो वो सिरे से उसको बहस में जाने की जरूरत नहीं. तो रिचर्ड थर्ड तो एक फ्लैट विलन है, एंटी क्राइस्ट है, एंटेगोनिस्ट है. उसके बारे में कभी किसी ने उसको हीरो बनाने की कोशिश नहीं की. मैंने जो अभी इंट्रोडक्शन में बातें की थी वो उस रिचर्ड थर्ड की हैं जो हिस्टोरिकली एक किंग था, ना कि वो रिचर्ड थर्ड जिसको शेक्सपियर ने ड्रामे में पोर्ट्रे. तो शेक्सपियरियन रिचर्ड थर्ड इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम रियल हिस्टोरिकल फिगर. दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अरिस्टोटल के स्टैंडर्ड के मुताबिक तो स्ट्रिक्टली फॉलोइंग अरिस्टोटल स्टैंडर्ड्स, Macbeth is not a tragedy. Even though Shakespeare tries to make him a tragic hero, but Aristotle does not own it. जो अरिस्टोटल का जो है वो सिलसिला है उसके, but Aristotle's ideas, they are open to debate and discussion, and they have been violated by different characters. For instance, one of the contemporary writers of Shakespeare is Christopher Marlowe. Marlowe's character like Barabbas, like Tamerlane, like Dr. Faustus, they also do not come up to that merit that they should be royal and noble by birth. Neither of them was noble high gentry by birth. So that, and even they are like antagonist figures. They commit some type of evil. Dr. Faustus sells his soul to Satan. Barabbas deceives his enemies and commits a chain of murders, including the murder of his own daughter Abigail. Tamerlane, as an invader, murders, you can say, hundreds of people. तो जैसे जिन जिन बेसिस पर मार्लो के हीरोज जो हैं वो ट्रेजिक हीरो बनते हैं, उन्हीं बेसिस पर तकरीबन जो है वो शेक्सपियर का ये मैकबथ भी ट्रेजिक हीरो बनता है. तो जहां तक रिचर्ड थर्ड की बात है तो वो तो सिरे से उसकी कोई हीरो होने की बात ही नहीं है. उसको सिर्फ क्रिटिक्स ने इसलिए एक तरह से यूज किया था रिचर्ड अपना विलियम हैजलेट ने या एसी ब्रैडले ने, so that they can sport Shakespearean notion to make Macbeth a tragedy. जी सर. आप बताइए. एंड सर एक पेपर से रिलेटिव क्वेश्चन था, हमारे जो एग्जाम्स होने हैं उनसे रेलेवेंट एक क्वेश्चन था, वो पूछ सकते हैं? क्वेश्चंस के लिए ही मैंने आप लोगों को कहा. अच्छा, थैंक यू सर. सर ये मैं पूछना चाह रही थी कि जो CMS पे हमारे एग्जाम्स होंगे, पेपर होंगे, उसमें हमारे वीडियोस भी होंगी, हम वीडियोस ऑन करके बैठेंगे या वैसे जस्ट रिटर्न जैसे हम असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं? ये आइडिया तो मेरे अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था. आपने सोचा है? ऐसी किसी से कोई बात नहीं हुई वीडियो की, वहाँ क्या जरूरत है? और CMS पे पहले आप कोई वीडियो ऑन करके बैठते, मेरा ख्याल ऐसी कोई एक्सेस ही नहीं. मुझे इस हवाले से कुछ नहीं है.
मैं आप इस हवाले से इसके हवाले से ये है ना, हमारी अभी डेट शीट भी नहीं आई है, और अगर हमारा सीएमएस पेपर होना है एटलीस्ट वो हमें वो बता ही दे, वो ऑप्शन वगैरह जो है वो ऑन ही कर दें, एटलीस्ट हमें पता चल जाए कैसे पेपर होना है, तो हम उसकी खुद से यूट्यूब से या किसी और तरीके से हम उसका तरीका सीख लें, या हम उसकी प्रैक्टिस एटलीस्ट कर लें। इस तरह से अभी शुरू में एक बात आई थी 12 को। पहले सेशन में कि कोई डेमो जो है वो हमें दिया जाए, तो वो मैंने कहा था कि ये प्रपोजल जो है मैं एचओडी को और कंट्रोलर एग्जामिनेशन को फॉरवर्ड कर देता हूँ, आगे वो जो डिसाइड करे वो उनकी मर्जी। दूसरी जो बात है कि ये इतना भी मुश्किल टास्क नहीं है। टास्क क्या है कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन अपीयर हुआ है, 4 ऑप्शन है, आपने अपने कर्सर से उस ऑप्शन को जाके क्लिक कर देना। इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। और सर इसी वो तरह एमसीक्यूज के लिए ना, जी, वो उसका जो एमसीक्यूज के दूसरा लिए। क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव टाइप, आप लोगों का तो इंतहाई आसान है। आप लोगों का सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। आप एमएस वर्ड की टाइपिंग करते हैं, वहां जैसे डिस्कशन बोर्ड पे टाइप करते हैं, वैसे ही आपने इस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए टाइप करना है। आपके पेपर में कौन सा मैथ की तरह के जो है वो सिंबल्स हैं, कि आपने कहीं कोई फ्रैक्शन लिखने हैं, या कोई जो है वो आपने राउंड अबाउट फिगर के साइन बनाने हैं, या कोई एलिप्टिकल शेप्स जो है वो ड्रा करके तो वो थ्योरम प्रूव करने हैं, ऐसी तो आपके आंसर में तो चीज ही नहीं है। ये तो इट्स आवर साइंस गुडनेस वाले सर। हैं, उनके लिए इश्यूज काफी मेरे ख्याल में सख्त हैं। आप लोगों का तो बस ज्यादा एग्जेजरेटेड जो है वो मामला है, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि आप लोग कहते हैं कि हम आर्ट्स के हैं तो हमें कंप्यूटर नहीं आना नेट को क्या चाहिए कर था। रहे हो? ये आप लोगों का एक थीसिस है। हालांकि जो हायर एजुकेशन है उसका कंप्यूटर के बगैर कोई कॉन्सेप्ट ही है। किसी स्टूडेंट को मेरे ख्याल में बीएस और एमए करने का कोई राइट नहीं है अगर वो अपने रेलिवेंट कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज नहीं कर सकता, जो कि आप लोगों के केस में एमएस वर्ड। ये हायर एजुकेशन का लेवल है, कोई बेसिक एजुकेशन की बात नहीं है। तो इसमें थोड़ी बहुत आप लोगों को चीजें सीखनी ही पड़ेगी, उसके बगैर तो कोई हल नहीं है। जी सर। सर एक हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्टर स्केच ऑफ हैमलेट इन द लाइट ऑफ ऑफिलिया सोलोलॉजी। सर ये क्वेश्चन नहीं मुझे समझ आ रहा था, इसका कुछ रेलिवेंट मटेरियल भी नहीं मिल रहा था, मैंने मैं इसका बहुत इसका ट्राई कर रही थी। रिस्पॉन्ड करता हूँ। मैं एक बात करना लगा था कि मैं 2006 में मैंने एमफिल शुरू किया था, 13 साल पहले, और यकीनन 13 साल पहले आप जो है वो प्राइमरी स्कूल में होंगे। तो 13 साल पहले भी जो है वो कोई किसी किस्म की माफी नहीं थी कि अगर हमें कि हम जो है वो क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी थी जीसीयू, वहां पर एमएलए साइटेशन था, तो वो अगर एमएलए साइटेशन पर अगर हमने असाइनमेंट नहीं बनाई कंप्यूटर पे टाइप करके, तो वो तो उसको उसी वक्त फाड़ के फेंक देते थे टीचर। वो कोई ऐसी कोई चीज थी ही नहीं। कोई 13 साल पहले की दुनिया में कि कोई स्टूडेंट कहे कि मुझे टाइपिंग नहीं आती तो मैं मर गया और मैं थक गया और मैं टाइप कैसे करूंगा, तो ये कैसे होगा, ऐसा वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो 13 साल बाद वाली जनरेशन से तो कुछ बेहतर ही तो रखनी। जो बात है ओफिलिया की, Ophelia's soliloquies in memory scene point out how Hamlet looked to courtiers and observers as a soldier, scholar, and a man of fashion. These are the points which you will get from that soliloquy. आंसर जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया, पहले भी कहा था कि किसी जगह इनका कोई आंसर नहीं लिखा हुआ। एवरी स्टूडेंट विल फॉर्म हिज और हर ओन आंसर।